Hello students, today we are going to learn about our festivals, chapter 8 from book My Green World class 3 EVS. Our Indian festivals are divided into three parts: national festivals, harvest festivals and religious festivals. National festivals are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Harvest festivals are Bihu, Baisakhi, Onam, Pongal. Now religious festival. Religious festivals are like Holi, Teej, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Eid, Dasara, Diwali, Gurpurab, Christmas, etc. So we are going to see one by one in detail. Okay. So what is festival? Festivals are the time to rejoice. Rejoice, that means to show great happiness, to show love, happiness. Okay? So festivals are the time to rejoice, to show happiness. People celebrate different festivals all over the world. Okay. So what is the festival? Festival is the time to celebrate happiness, show the love, get together and have some fun. So every festival have their own importance. We in India celebrate more festivals than anywhere else in the world. In India, we celebrate lots of festivals. Why it is so? Because we have people of different communities and cultures living together in our country. In India, in our country, we have the different communities, different culture people are living here. So that's why we celebrate lots of festivals. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट होता है. क्यों? क्योंकि इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटीज कल्चर के पीपल्स रहते हैं साथ में. ठीक है. इंडिया में अलग अलग कंट्री के अलग अलग कल्चर के अलग अलग कम्युनिटीज के पीपल साथ में रहते हैं. सो दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स. ओके. नाउ Indian festivals categorize into three parts: national festival, harvest festival and religious festival. So Indian festival are categorized into how many parts? Three parts. Tell me. National festivals, harvest festivals and religious festivals. Okay. We will see one by one. What is national festivals? National festival. National festival. National festivals are celebrated by everyone. Okay, so national festivals are those festivals which are celebrated by everyone. They are also symbol of unity of our country. National festival. National festivals are celebrated by everyone. So national festivals are those festivals which are celebrated by everyone. They are also symbol of unity. They are also symbol of unity of our country. Okay. So national festival are celebrated by everyone. This national festival are the symbol of unity of our country. ठीक है. नेशनल फेस्टिवल सारे डिफरेंट जितने भी कम्युनिटीज हैं या जितने भी अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो सब मिलके ये नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स आर सिंबल ऑफ यूनिटी. ये क्या बताता है? सिंबल ऑफ यूनिटी है. ओके. सो वी विल सी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती विद वीडियो क्लिप्स. इंडिपेंडेंस डे. India celebrate Independence Day on 15th August every year. So when we celebrate Independence Day? On 15th August. Okay. On this day in 1947, our country got freedom from the British rule. So that's why we celebrating. In 1947, our country, India, got freedom from the British rule. Many people died fighting for the freedom of our country. We remember those freedom fighters on this day. Okay? Okay? इंडिया को फ्रीडम करने के लिए, फ्रीडम करवाने के लिए ब्रिटिश रूल से
बहुत सारे लोगों ने लड़ाई किया था, फाइटिंग की थी, जिसमें से बहुत सारे जो शहीद हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी डेथ हो गई। उनको हम यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं इस दिन। ओके, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र मोदी, वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंस डे में नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं। कहाँ पे? रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, वहां पे वो नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं एंड वो स्पीच देते हैं, स्पेशल मैसेज देते हैं, जो उनका पीस, प्रोग्रेस, क्या क्या करने वाले हैं, कैसे पीस मेंटेन होगा, शांति कैसे आएगी, उस पर वो नेशन को स्पीच देते हैं। ठीक है, I am going to just highlight the important things. In Independence Day, we celebrate on 15th August every year. Okay. In 1947, we got the freedom from the British rule. Okay. And then what we do in Independence Day, the Prime Minister of India hosts the national flag at Red Fort in Delhi and speak the nation, giving the special message of peace and progress. I'm going to show you the video of Independence Day celebration. Okay, then you will get the idea. Have a look. This is Red Fort in Delhi. ये रेड फोर्ट है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नेशनल फ्लैग होस्ट करेंगे एंड स्पीच देंगे पीस एंड प्रोग्रेस पे। ओके, तो इंडिपेंडेंस डे में हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे इंडिया में कैसे सेलिब्रेट होता है? इन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली and give the speech on peace and progress. Okay. Republic Day. Republic Day on 26 January 1950, India become a republic country. Okay. 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. We celebrate Republic Day on 26 January. On this day, the Constitution of India came into force. Constitutions, that means the Indian own rules and regulation. To celebrate it, every year a big parade is held in New Delhi, which showcases the military might and cultural diversity of the country. Okay, so this parade starts from Vijay Chowk near Rashtrapati Bhavan. So we celebrate Republic Day on 26 January every year. On this day, the Constitution of India came into force. Okay, and how we celebrate Republic Day? Every year, big parade held in New Delhi. Okay, which parade show the military might or different cultural diversity of the country, the state culture. And this parade starts from Vijay Chowk near the Rashtrapati Bhavan. Okay. On Republic Day, the soldiers of all three armed forces march down the Kartavya Path Rajpath, and beautiful tablets from the various state and cultural dance performed by school children are also the part of this parade. Our president takes the salute from the parade and the parade ends at the Red Fort. Okay. Beautiful tableaus from the various state and cultural dance performed by the school children and are also the part of this parade. Our president takes the salute from the parade and the parade ends at the Red Fort. Okay, so what things you remember for Republic Day? I am going to repeat and highlight the important points. Okay, so on 26 January we celebrate the Republic Day. Okay, Independence Day we celebrate on 15th August and Republic Day we celebrate on 26th January. Okay, so you have to remember these things. Why we celebrate Republic Day? Because on this day in 26 January 1950, Indian Constitution made, Indian rules and regulation, Constitution of India come into force.
Okay, Constitution of India come into force on 26 January 1950. So from on that day, every year on 26 January we celebrate Republic Day. Now next thing we remember how we celebrate Republic Day or what things we are doing in the Republic Day. Okay, to celebrate Republic Day, every year big parade is held in New Delhi. You can see in TV. Okay, Republic Day के दिन big parade held होता है जो different cultural diversity या state culture को दिखाता है, या हमारी जो मिलिट्री फोर्स है, आर्मी फोर्स है, एयर फोर्स है, वो भी अपना टैबलोज दिखाते हैं, वो भी अपनी झांकी देते हैं या वो अपना प्रदर्शन देते हैं और सैल्यूट देते हैं नेशनल फ्लैग को, प्रेसिडेंट को। ओके, उस दिन दिस परेड स्टार्ट फ्रॉम विजय चौक। ठीक है, ये परेड कहाँ से स्टार्ट होता है? विजय चौक नियर द राष्ट्रपति भवन एंड एंड इन रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पे एंड होता है, स्टार्ट होता है विजय चौक से और रेड फोर्ट पे एंड होता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि 26 जनवरी को एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड दिस रिपब्लिक डे स्टार्ट फ्रॉम द विजय चौक, okay, and end at the red fort. And why we celebrate? Because Constitution of India come into force on that date. इस रिपब्लिक डे के दिन जो सोल्जर हैं, 3 आर्म फोर्स है, वो मार्च करते हैं, वो परेड करते हैं, मार्च पास करते हैं एंड देन जिस स्टेट है उनके कल्चरल डांस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट के कल्चरल डांस परफॉर्मेंस परेड के थ्रू दिखाया जाता है। ओके, मैंने इस चैनल पे अलग से रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का वीडियो डाला हुआ है कि डिफरेंट स्टेट, इंडिया के डिफरेंट स्टेट कैसे परेड के थ्रू वो अपना कल्चरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपने स्टेट के कल्चर को शो करते हैं। तो आप चैनल पे जाके आप देख सकते हो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ओके ओके, नाउ गांधी जयंती। Now tell me, who is the father of nation? Yes, Mahatma Gandhi is father of our nation. Okay, so in Gandhi Jayanti, the birth anniversary of father of our nation, Mahatma Gandhi, is celebrated every year. And when we celebrate on 2nd of October. Okay, so birth anniversary of the father of our nation, Mahatma Gandhi, is celebrated every year on 2nd October. When we celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Okay, 2nd October, you have to remember this thing. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October and this is the birth anniversary of our father of nation. Who is the father of nation? Mahatma Gandhi. Okay, okay, he was lovingly called Bapu. सब उनको प्यार से बापू कहते थे। ओके, प्रेयर मीटिंग्स आर हेल्ड एवरीवेयर, स्पेशली एट दी समाधि राजघाट इन दिल्ली। हाउ वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? तो प्रेयर्स मीटिंग्स आर हेल्ड एवरीवेयर, स्पेशली एट हिज समाधि। इनका राजघाट दिल्ली में समाधि है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। वहां पे प्राइम मिनिस्टर और सब मिलके प्रेयर करते हैं। I'm going to show you the video of Gandhi Jayanti celebration. Prime So, Minister of India, this is the way Shri we Narendra celebrate Modi, the Gandhi Jayanti. On that offering day, we floral do tribute prayer to Father of the at the Nation, Samadhi, Mahatma Gandhi. Rajghat, Delhi. रक्षित रहे तुझसे सदा, कर प्रफुल्लित On 2nd October every year we celebrate the Gandhi Jayanti. Okay? स्नेह का। Now name 2 other festivals which are celebrated all over India. They are, however, not holidays. On that festival, we are not getting the holidays. They are celebrated mostly in school. And can you guess which one are they? Yes, Teachers' Day and Children's Day.
Teachers Day we celebrate on 5th of September. Okay, and Children's Day we celebrate on 14th November. So these two festivals we celebrate in school and college. In next video, I am going to tell about Harvest Festival. Channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe this channel and click the bell icon and share with your friends, like and comment. Thank you so much.